But what is inline input? Inline input is something that you are going to supply as an argument. That means, let's say I am just making this file executable, and I want to give input here, let's say 100 and 200. मैं यहीं से input देना चाहता हूँ, तो इसे हम बोलते हैं inline input. In the same line we are passing it. So I'm gonna talk about inline input. ये कीवर्ड आप गूगल करके आना, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको. ओके, सो नाउ एडवांस इनपुट में हम इनलाइन इनपुट की बात करने वाले हैं. लेट मी मेक इट कमेंट. सो आई एम गोइंग टू राइट method 3, and that is inline input. Okay, how do we comment multiple lines in bash? So multiple line हमें bash में comment करना है तो हम ऐसे करेंगे जी, double less than sign, then anything, it can be x, it can be a, it can be b, we call it marker. और जब आपको फिनिश करना हो तो आपको सेम मार्कर, यानी कि ये जो आपने लिखा है सेम मार्कर you have to use here. So, fine. So we'll start with this and close with this. ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट. So let me write it down for you. Multi line comment in bash / shell. ये कैसे होगा? Double some marker, then data and marker again. ठीक है, मार्कर क्या है? x, या जो भी आप x x y y z z. तो इससे आपका पूरा कोड कमेंट होगा. Now I'm going to talk about this what it says inline input. Alright, so I can take inline input by using variable. Let's say I'm talking about first. Okay, so what is first? What is $1? $1 means if I'm doing this file name and 3 argument like this, even 4 argument, 100 0 4 hello. After the file name I have given first, second, third, fourth, 4 argument. So when I write $1, it is going to take 100 only. Enter 100 only, because in the advance we call $1. $1 means the first argument. Likewise, $2 means second argument. So if I put $2, it will print only 0. Okay, जो भी आप इसके बाद टाइप करेंगे 0. इसका देखो आइडिया देता हूँ. For example, if you write date plus percentage capital T, this is the first argument after file name. So if I copy this advance file under USR bin by the name of my input, okay, when I run command my input with argument 1 or argument 2 and argument 3, it will only take second argument. Okay, because in my USR bin my input file I've just given 2. Okay, likewise, so you can keep increasing number 0 1 2 3 4. Likewise, what if I write $0, right? It will give the file path itself. ठीक है, $0 का मतलब फाइल का path. And what if, so let me write it, print file path echo $1 first argument after file name and like wise
others. Okay, like $2 and 3 and so on. Okay, now what if I want everything? Okay, so $@ means, and my input command, if I give this, see, $0, $1 and $@, that means all argument, hashtag all argument after file name. Likewise, echo hash this number of argument. See, so if I'm giving like my input 3, 2, or this 6, so likewise you have number of numbers, so this. There is one more in some cases, $*. If you talk about $*, it is same as $@. Okay, same as $@. ठीक है, तो ये काफ़ी सारे इनपुट के मेथड्स हो गए. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज मेथड्स. और ये बहुत यूजफुल हैं, आई मीन लिटरली बहुत यूजफुल हैं. ऑलराइट, so if you are understanding it, ओके, आशिफ ने कोई क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू वी टेक अ सिंगल कैरेक्टर इनपुट सो वी डोंट हैव टू प्रेस एंटर आफ्टरवर्ड्स. सिंगल कैरेक्टर एज अ इनपुट को आप ऐसे नहीं डिफाइन कर पाएंगे आशिफ, बिकॉज एंटर बटन इज अ सिग्नल अगेन. फाइन, सो इसका आंसर मैंने दिया हुआ है, अगर आपको याद हो तो, STTY. उससे आप कोई भी कैरेक्टर को एंटर बटन बना दो. सो वंस यू राइट द कोड, ठीक है, ऑलराइट, ओके. आशिफ, आपको आपका आंसर मिला होगा. बाय डिफॉल्ट 0 प्रिंट शेल टाइप लॉगिन और नॉट लॉगिन. ये $0 शेल टाइप. ओके, यू आर सेइंग नहीं, शेल $0 शेल प्रिंट नहीं करती. $0 का मतलब होता है जो भी आप कोड चला रहे हो, ये कोड कौन चला रहा है, ये कोड दिस इज एग्जीक्यूटेड बाय दिस वन, तो इसने इसका नाम दे दिया. एक्चुअली बैश और दिस वाज सेम, तो ये $0 का मतलब ये है कि इसको किसने चलाया, उस फाइल का नाम प्रिंट करना है. राइट, हर्ष, आई होप आप समझ गए होंगे. राइट, ओके, सो वेरी मच. Now I am going to just give you some idea about what I say conditional statement. तो आपको conditional statement आज काफ़ी सारे असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे वैसे शेल में. conditional statement, okay, like if and else, right, in shell. तो इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी. ऑल राइट,
after login shell, so this is a login shell. हर्ष, आप जो भी बोलना चाहते हो या तो देख लेना बाद में, because bash is a login shell. Anyway, so now I'm going to just take condition.sh, बहुत easy है, and again bin bash c. I'm going to write if. सबसे पहले यहाँ पे कुछ न कुछ लिखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल $1 मीन्स पहला आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू हेलो एंड वी हैव टू यूज देन. सो इसके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए. इफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज हेलो देन and then is a condition, then whatever you want to do. So let's say I want to run date command just for practice. Okay, so I'm just executing current time is \date. Okay, likewise if I want to match more than one argument, elif. Okay, here if I want to match $1 is equals to let's say what I say is like word, then echo my word is I don't know, fine, and elif. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है. इफ यू वांट टू कंपेयर न्यूमेरिकल नंबर्स इन इफ, देन यहाँ पे ये लिखना इज नॉट क्वाइट गुड. मतलब इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स नॉट गोना वर्क, इट गोना वर्क, बट इफ यू वांट टू कंपेयर विद सम न्यूमेरिकल नंबर्स, तो आप यहाँ पे ई क्यू इज इक्वल्स टू लेट्स से 100. ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं. देन let's say I'm running cat command eq. तो ये कैसे है exactly, numbers को ऐसे लिखना है. for example eq for is equals to, ऐसे ही hyphen gt for greater than, hyphen lt for less than, और le for less than or equals to. like ऐसे करके आप यहाँ पे eq, gt, lq, lt kind of. okay, then let's say else, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ else में आपको then नहीं लगाना. तो I'm running cal 2020 and you need to close if by fi. तो if कैसे क्लोज होता है यहाँ पे, if के रिवर्स से. ठीक है. सो सिंपल सी बात ये है कि आपको ये वाला काम करके रखना है. ओके, so you'll be getting a number of assignments for the same. So let me just close it. I'm making this executable. Now dot slash condition, say hello, yes, word, yes, 100, yes, no value, yes. तो आपका easily काम हो जाएगा. तो बहुत ही आसान है. आई एम नॉट गोना डिफाइन लाइक अ काइंड ऑफ नंबर ऑफ कंडीशंस, बट ठीक है, राइट. तो ये कुछ ऐसे भी हो सकता है. आई होप दिस विल बी वेरी मच इजी and
Understood. Okay. So if you're all right, just let me know. No, no. EQ will not work with strings rhythm, right? तो गाइज आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे सकते हैं अगर ये मतलब बहुत इजी है. आई डोंट फाइंड इट वेरी मच कॉम्प्लेक्स. अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में पहले से काम किया हुआ है तो इट्स प्रिटी फाइन, राइट? सो यू डोंट हैव टू इन शॉर्ट वरी अबाउट इट. ओके, so simply all right, wonderful. So I'll be giving you an assignment for the same जो आपको ये करेगा, ठीक है? Okay, now there is one more thing. Sometimes I'm going to give you one more example. Let's say vim if dot sh, ठीक है, has exclamation and then bash, ठीक है. If rather than writing some conditions here, I can also check for file, F for file. If there is a usr bin date file is present, then run date command, else I can write date command is not present, ठीक है. मतलब डेट कमांड चलेगी ही कब, जब डेट कमांड होगी, ठीक है. तो यू कैन चेक अ प्रेजेंस ऑफ अ फाइल बाय यूजिंग -f ऑप्शन. इससे क्या आउटकम ट्रू आएगा अगर ये फाइल है, और ट्रू आया तो एग्जीक्यूट. सो इफ आई मेक इट एग्जीक्यूटेबल देन ./if.sh. सी, मान लो कि मैं इसे मूव करके डेट को date 1 कर देता हूँ. That means there is nothing like date. Now if I run this file, क्या date command is not present. Okay, simply. So if is also very much okay with checking file by using -f. Likewise ऐसा काफ़ी कुछ है जो आप if में देख सकते हो. You can use man if. तो if क्या है, if एक स्टेटमेंट है शेल के लिए. आप यहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे if के अंदर, राइट? वैसे यहाँ पे कुछ दिया नहीं है खास, बाकी आप गूगल पे या कहीं भी देख सकते हैं. इट्स नॉट एनीथिंग, ठीक है. तो दिस इज समथिंग अबाउट योर काइंड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है. सो इजी है, काफ़ी इजी है. अब डायरेक्टली आपके लिए एक असाइनमेंट काफ़ी सही सा मैंने सोचा है, तो आई गिव इट टुडे. ओके, तो आई थिंक आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड थोड़ा मोटिवेटेड रहना चाहिए, जिससे हम आगे काफ़ी कुछ नया कर पाएँ. नेक्स्ट सेशन शेल का अगेन ट्यूसडे को होगा, एक दिन छोड़ के, एज वी डिस्कस. और नेक्स्ट संडे को अभी से मैं प्लान कर देता हूँ. नेक्स्ट संडे we are having one kind of exam, ठीक है.
एक एग्ज़ाम हम लोग रखेंगे नेक्स्ट संडे, एंड ये ओपन टू एवरीबडी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो लोग पढ़ रहे हैं वही दे सकते हैं, आप कोई भी आपका फ्रेंड हो, दुनिया में कोई भी इधर उधर हो, ओपन टू ऑल है। एग्ज़ाम्स में वही आएगा जो हमने अभी तक पढ़ा है, बट आप ट्राई करो कि आप पास हो जाओ इसी टॉपिक पे, और मैं ट्राई करता हूं कि आप फेल हो जाओ। ठीक है, तो देखते हैं कौन जीतता है। देखो टॉपिक आपको पता है, कोई एडवांस टॉपिक नहीं है, सब कुछ वही आएगा जो हमने पढ़ा है। ओपन बुक एग्ज़ाम है तो यू कैन गूगल इट, आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना है, राइट। हाँ, अगर आप डे से अच्छे से जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस और उसके हिसाब से आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज कर लिया, खासकर वो बिग ओ सिनेरियो में, तो बस मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ कि हम डेटा स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे लिनक्स कर्नल में, बट देखते हैं, राइट। क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे डिज़ाइन होंगे, बट टॉपिक्स ये रहेंगे, राइट। सो ऑलराइट गाइस, सब कुछ ठीक है अभी, तो से यस एंड प्रिपेयर योर थिंग्स, आई मीन थिंग्स तो क्या ही है, अपने आप को प्रिपेयर करो एंड लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। एफ मतलब पास, सो अच्छी बात यह है कि गूगल वर्सेस गूगल 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 एंड अब सब लोग गूगल यूज़ करेंगे एंड डेफिनेटली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बड़ा फैक्टर रहेगा, नो वरीज। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम मंडे को एंड एग्ज़ाम तो आपका संडे को फिक्स है। टाइमिंग्स डिटेल्स कैसे क्या देना है, आई विल बी डिस्कसिंग एंड इवन आई विल बी गिविंग टू एवरीबडी। आपको हर किसी को एक डिफरेंट लिनक्स मशीन मिलेगी और वहाँ पे आपको आंसर्स परफॉर्म करने हैं। आंसर डेफिनेटली परफॉर्मेंस बेस्ड एग्ज़ाम है, तो प्रिपेयर योर बेस्ट, राइट। थैंक यू सो मच एंड हैव फन। जितना भी संडे आपका बचा है अभी, तो आप उसे ये करें, बाकी देखते हैं, राइट।